So let us, yeah, just a sec. Huh. Now he told her that she was an understanding person. This should be the indirect. Note that the reporting verb is said, object is her, the personal pronoun you changes to she, that is the same person as that of the object. है ना? The person who is referred as an object is the same person within the brackets also, sorry, within the quotation marks also. Is her equals to you? Yes, ma'am. है ना? Take your time. Her is equals to you. So that's the reason she was an understanding person. ठीक है? Now you changes to she. ठीक है? All right. Rashi told him your bag is new. Rashi told him that his bag was new. So here the belonging belong to whom? To the object of the reporting verb, which is here him. Him is the object of reporting verb told. समझ में आ रहा है भाई? Yes, ma'am. ठीक है ना? तो यहाँ पे Yes, ma'am. राशि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू. हिज ने रिप्लेस कर दिया योर को. योर किसके लिए आ रहा था? हिम के लिए. और यहाँ पे हिज भी किसके लिए आ रहा है? हिम के लिए. ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जैसे कि आई मी वी, है ना? मी क्या है? मी तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई का. So, and the possessive adjectives, my, are, in direct speech change into the same person as the subject of the reporting verb in indirect speech. He says, I am tired. So he is referring to his own self. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. So he says that he is tired. ठीक है? Note that I changes to he according to the person of the subject of the reporting verb. ठीक है? I am, so he is. Changing you, your, yours. These words indicate the person being addressed, so they change accordingly. Rita told her, your friend likes you. Rita told her that her friend liked her. Rita said to you, your friend likes you. Rita told you that your friend liked you. Rita said to me, ध्यान दे रहे हो? Are you observing? Rita told her, Rita said to you, Yes, ma'am. Rita said to me. Yes, ma'am. Her, you, me, है ना? So your friend likes you. Rita told me that my friend liked me. How the different forms of these pronouns are changing. Rishu, समझ में आ रहा है? Are you following us? Yes, ma'am. Good. So let's move ahead. Conversion of different types of sentences uh, into indirect speech. Con- okay. So conversion. What do you mean by conversion? When we convert sentences from one kind to another. When we change, there is some there is some change undergoing in their structure. Acha. What do you mean by assertive sentences? Title though I've read. But before I begin, I must know where my learners are. What is assertive sentence? Anybody? Ma'am, which states any fact, Which states anything. any fact, Acha. So Poonam believes assertive sentences are those which states a fact. Anybody else?
Ma'am, a statement. ओके, सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो. स्टेटमेंट का मतलब क्या? Ma'am, a simple sentence that states any fact. अच्छा. So basically, we are going to get facts in assertive sentences. है ना? Yes, ma'am. अच्छा. अब जरा, can you just observe these sentences which are given under this heading and can tell the same thing? Ma'am, see, for example, in this sentence, likewise, like this, I'm expecting. अप्लाई करो, जो तुम लोग बोल रहे हो उसको अप्लाई करो और बताओ. The coach said to the Indian cricket team, your fielding is not up to the mark. The coach told the Indian cricket team that their fielding was not up to the mark. Recently, Virat Kohli has announced his retirement. I'm sorry, his resignation from all sorts of test and one days as from captaincy. Are you aware of this fact? Yes, ma'am. No, ma'am. क्या पूनम, कुछ तो क्रिकेट देखा करो तुम. अरे न्यूज़ ही सुना करो. So I think there is some kind of heated argument or maybe some cold conflicts are going on, right? As if I refer back to the last to last month's news updates. So maybe, so is it a kind of info? Say, Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. if a headline is beaming across all the news channels, like Virat announces resignation from captaincy post, maybe, or maybe some better statement like that. So, is it a assertive sentence? Yes. Ji Yes, haan. ma'am. Assertive sentences are sentences which tell about a factual thing, means they are quoting facts, they are telling you something which is actually true to be tested, can be verified, है ना? it it can be a declaration also. Yes, ma'am. I am your class teacher, consider this. So here, is it a kind of declaration? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it Yes, ma'am. is it also an assertive? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो आई होप सबको क्लियर है. अब जितने लोग सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, आई होप असर्टिव का नोशन सबको क्लियर है. तो अब बेटा इसमें जब हम पढ़ेंगे, द वर्ब सेड इज चेंज टू टोल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट follows it. The verb said remains unchanged when it is not followed by an object. ध्यान दीजिएगा इस बात पे. When it is not followed by an object, the comma and the inverted commas are omitted and replaced by the conjunction that. Omit means replaced, totally gone. और आता क्या है वहां पे? That comes into picture, right? So the verb said may also be replaced by other verbs like answer, state, inform, reply, mention, explain, and so on. The old man said to the sailor, the sea will be rough according to the weather forecast. The old man informed the sailor that the sea would be rough according to the weather forecast. Are you able to get these? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chayanshi said, I am reading a comic. Chayanshi said that she was reading a comic. Right. So, okay. Now, take this exercise up. Exercise B. Rewrite the following sentences in reported speech. The plumber, right pronunciation is plumber. ब का साउंड नहीं आएगा इसमें. ठीक है. The plumber said to the lady, I'll replace the tap next week. ओके, अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा. अरहान, आर यू हियर इन विद अस? बालकृष्णा,
हाय हाय। अरे भाई बालकृष्णा, बताओ भाई, कुछ काम वाम करो यार। B1 का आंसर बताओ, फिर चले जाना तुम मैकडोनल्ड्स खाना खाने। चलो B1 का आंसर बताओ। ओ प्लम्बर, प्लम्बर नहीं पढ़ते हैं, प्लमा, प्लमा। गुड, जल्दी जल्दी बोलो। कितने लोग बोल रहे हैं तुम्हारी एक आवाज में? दैट के बाद कुछ समझ नहीं आया। द प्लम्बर टोल्ड द लेडी दैट, दैट ही वुड रिप्लेस द टैप द फॉलोइंग वीक। ये आंसर होगा। ठीक है, ओके। अभिनव तुम मुझे आंसर बताओ सेकंड का, आरव तुम मुझे थर्ड का आंसर बताओगे। बी रेडी विथ योर ऑर्डर। ठीक है, चलो भाई, सेकंड का आंसर किसको बोला है मैंने? Yes, ma'am. शुरू हो जाओ। Mohan told the new watchman that uh, he had he had uh, टू, he had to give relevant papers for the police verification. फॉर द नहीं, फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? यू मे कीप ऑन राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, आरव है यहाँ पे, आरव को मैंने थर्ड बोला है। आरव, ठीक है जी। करुणा है हमारे साथ। बेटा आप हो क्लास में या नहीं हो? सब सोशल पढ़ने के लिए आए होंगे। एंड द मोमेंट दे सी दैट देयर इज अ बिग बिग ब्लैक कैट इनसाइड द क्लास, ओ माय गॉड, दे रन अवे। पक्का यही हो रहा होगा। अरे तो मेरी आवाज सुन के भाग जाते होंगे। मस्त है सब। चलो ठीक है, हु विल टेल? चेतना पथोड़े। अच्छा आदित्य, ओके, यू विल टेल मी द आंसर ऑफ फोर्थ वन। अरहान, व्हाई डू यू नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन मैन? हाँ, सब बहुत बदमाश हो। जब टीचर्स बोलते हैं तो बोलते ही नहीं हो तुम लोग। थर्ड का आंसर कौन बताएगा? चेतना। इसको तो जितना पिटाई करो उतना कम है। कहाँ हो तुम लोग भाई? आंसर करो थर्ड को। आदित्य तुम आंसर करो। Okay, ma'am. Ma'am, the answer for the third one is Geeta met Nirmala and told her that she had liked the sun cakes that she had sent. वेरी गुड, इट इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है? दिव्यांश, अनुष्का, ओके, ऑल क्लियर। सबको सब समझ में आ रहा है भाई। मुझे रीशु, रीशु तुम हो ना यहाँ पे? Ma'am, may I answer the fourth one? फोर्थ वन? कुछ नहीं आंसर करना है। सुनो, कौन है ये? मैं आई आंसर दी फोर्थ वन? खुशी। तो मुझे एट्थ वाला आंसर करो, कहानी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबको सब आता है भाई, मैं इतना फालतू डाउट लेके बैठी हुई हूँ। एट्थ वाला आंसर करो बेटे। The president said the countrymen the health insurance scheme would be effective from the following day. बहुत बढ़िया, पर ये करेक्ट नहीं है। Ma'am, may I? सब तुम ही करोगे? Sir, एंजल द्विवेदी, Yes, sir. बताओ। The president told the countryman that the health insurance scheme हाय would हाय, be the following day. इससे अच्छी चेन तुम पहनती होगी। वो चेन नहीं लिखा है मेरे बच्चे, वो स्कीम लिखा है। ठीक है, स्कीम की स्पेलिंग यही होती है, SCH, है ना? Okay. और यहाँ पे द प्रेसिडेंट टोल्ड दी कंट्री मैन है, मैन नहीं होगा। मैन लिख दोगी तो मैं जीरो कर दूंगी। सोचो, सिर्फ जीरो कर दूंगी मैं। एक नंबर का करो और हाफ या हाफ मार्क का भी होगा। मैन का मैन जीरो, ग्रामर इतना वो है।
आप स्कोर भी कर सकते हो और आपके जा भी सकते हैं नंबर। आरव, आ गए तुम? सेवेंथ का आंसर करो। चलो बहुत बढ़िया। He said to his aunt, the water filter was installed 20 days ago. इस सेंटेंस का मतलब कौन बताएगा मुझे? मिस्टर गुप्ता, शाश्वत गुप्ता, Yes, ma'am. बताओ इसका मतलब बताओ, मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, सेवेंथ वन। Yes, ma'am. Ma'am, a boy is telling to his aunt that the water filter was installed 20 years ago. 20 days ago. He said to his aunt, was installed. ठीक है। So, is this person informing or telling? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. है ना, बता रहा है वो। So Yes, the ma'am. person who is being told seems to be having no idea about that fact that this water purifier was installed. How many, for how many days it's working, or has gone, like it has been damaged, or what is the status, right? करेक्ट। सो अब चुपचाप मैं आ जाऊंगी एक्सरसाइज सी पे। ठीक है, आप लोग ये बीच वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। कमांड क्या होता है, रिक्वेस्ट किसे कहते हैं, एडवाइस कैसे समझेंगे आप, राइट? सजेस्ट सेंटेंस कैसा होगा कि आपको पता चलेगा कि ये कोई किसी को सजेस्ट कर रहा है, कोई किसी को वॉर्न कर रहा है, कोई किसी चीज को फॉरबिड कर रहा है। आई फॉरबिड यू टू एंटर माई क्लास, आई फॉरबिड यू टू टेक दैट नोटबुक। क्या मतलब होता है फॉरबिड का? मना करना। यू आर नॉट अलाउड। Ma'am, हाँ रिशु बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम फॉर्मेट का मीनिंग बैन भी होता है। जी बिल्कुल। जब अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले आपका नाम लिया था, तो आप कहाँ कहाँ गए थे? आप चुपचाप ऐसे ही रहते हैं। अगर आंसर आप लोग गलत भी बोलने के लिए, इफ यू फीलिंग लाइक आई मे एंड अप स्पीकिंग रॉन्ग blunder, then too I would encourage that please always take part. Here I am all doing is I'm trying to encourage you people to speak up. I'm not expecting you all to state the right answer in the first go only. लेकिन कम से कम तुम लोग बोलो तो। ठीक है रिशु? मुझे तो लगता है भगवान ईशु आएंगे तब रीशु बोलेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। C. Read the following sentences and identify whether they are commands, requests, or advice. It's very nice. Then rewrite them in reported speech. Oh, ho, it has a two-way condition with it. Firstly, you need to identify, and after identifying, you need to change it accordingly. So, if you have identified a sentence to be of advice, then you need to make it that you have to make that sentence look like an advice. Okay, so go for the second one. All of you, take up the second one. Aditya, तुम अभी चुपचाप बैठो. Anybody else? मैम मैं Do we have Nishkarsh, Nirmesh, Kirti? इन लोगों के आप लोग बातें सुन लीजिए व्हाट्सएप पे. You know, ma'am, I tell you what, this has been happening with me for past 1, 2, 3, 4 weeks, ma'am, and this is the reason, I could not be regular. उसके बाद बस कोई दिखता नहीं है। पूनम, यू विल आंसर मी द सेकेंड वन, जल्दी शुरू करो। विच काइंड इज इट? 5 minutes to go for this. Ma'am, taking advice. Advice, what do you mean by advice, Poonam? One word of advice for me, be quick. Give me an, Ma'am, when someone advises no no someone, no, give me an advice in such a way that the meaning of the sentence automatically gets clear. This is your task. Time starts now. ma'am, thinking, क्या? Thinking? ma'am, I'm thinking, अरे क्या थिंकिंग? कौन सा तुम सप्लीमेंट लेती हो? यू इमीडिएटली स्विच टू बॉम्बिटा और बूस्ट और एनी एडवाइस में चलो। हु विल गिव मी अ वर्ड ऑफ एडवाइस? बी क्विक, एनीबडी? Ma'am, suggestions.
एक एक Ma'am, एक शाश्वत शाश्वत फर्स्ट लेट शाश्वत स्पीक it's ma'am guidance. है जी Guidance. you have not been a very Not good suggest. you have not been a very active listener, I can say now. What instruction have I given to Poonam? She said, ma'am, I'm thinking. Ma'am, बोलो एंजल तुम बोलो. एंजल भी थिंकिंग. और कोई? खुशी? Ma'am, you should Not be suggest. friendly with students. Ma'am, you should be barbaric with students. Friendly with students. Friendly with students. हाँ अभिनव, what do you think? ma'am, not very much friendly. See, he knows. Okay, and अच्छा तुम्हें भी बोलना Ma'am, है. मैं चल रहा हूँ. रुको रुको वेट लेट आदित्य से. हाँ आदित्य बोलो बोलो. ma'am, you should be taking precautions, ma'am, in this pandemic. All right, thank you so much. Yes, Poonam. I advise you to be healthy and take care of yourself. Wow, thank you so much. You people are my true connoisseurs. Thinking about my health and my well-being. I need it the most. Thank you so much. So I think advice is something which can be act. Oh, okay, I got it. So, advice is a piece of word that can be a sort of help. Say if somebody is in a fix ये phrase जो है बताता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में अगर है तो आपके वो शब्द उसके लिए एक मदद की तरह काम कर सकते हैं. That like that maybe the suggestion or the idea can be a kind of big help for that person, right? So advice is that. Okay, so the second one is the example of advice. The teacher advised the the teacher advised the children not to get friendly with strangers. ठीक है? This is the answer. First Yes, का ma'am. first का भी let me guess. Okay, First का wait the ma'am, class we को are Ma'am, may I? पूनम को बोलने देते हैं. आदित्य एक मिनट पूनम को बोले. हाँ पूनम बताओ इसका सेंटेंस कन्वर्जन बताओ. तुम इसका टाइप मत बताना. आइडेंटिफिकेशन मत बताओ. तुम इसका सेंटेंस कन्वर्जन बताओ. पूनम. The class monitor gave command to the boys stand in a queue. अच्छा Ma'am, वेरी. what is the आई गॉट इट आई answer? गॉट इट आई गॉट इट. बच्चे मेरे QUEUE is spoken as Q. When there is a long list of Q. when there is a long list of people standing in a bank or maybe at on the platform for reservation, that is called as QUEUE. Okay, Okay, ma'am. but the answer which you framed is not correct है ना. There are grammatical incorrection in it. So let us take. नहीं आदित्य ने भी कहा था. अच्छा खुशी को चांस देते हैं. आदित्य you just hang on. खुशी The करेक्ट. class monitor ordered the boys to stand in a queue. हम्म नहीं ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. ऑर्डर नहीं है ये. ऑर्डर ये ऑर्डर वाला एक्चुअली ये एक्शन नहीं हो रहा है. अगर तुम लोग थोड़ा सा और ध्यान से सोचो तो. अब हम आदित्य को बुलाते हैं. आदित्य व्हाट शुड बी द आंसर? ma'am, the correct answer should be that the class monitor commanded the boys to stand in a queue. वेरी गुड. समझ में आ रहा है पूनम खुशी? यहाँ पे हमारा वर्ड सिलेक्शन ये Yes, होगा ma'am. है ना. हम किसी को कमांड देते हैं. किस किस with what authority? Because I've been assigned as the class prefect or the monitor. Okay, thank you so much. This is for today, and I will take up this chapter again in my next lecture. So exercise C, rest of the parts you should do on your own. In case if any doubt, ping me on my personal. I will take up the question tags and conversion of interrogative sentences into indirect speech and the rest of the things in my next lecture. Still then, Okay, ma'am. stay healthy and keep Okay, reading. ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am.